Morning students, welcome to your English class. In last class we have started with the new chapter from your English grammar textbook. The name of the chapter is describing words. So in this chapter we are going to learn about the describing words. So what is mean by describing word? Describing words are those words which describe your noun. These describing words tell us about the shape, size, color, स्पेशल क्वालिटीज़ और द नंबर ऑफ द नाउन. ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन की विशेषताएं बताते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो हमें नाउन की शेप, साइज, कलर या क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में जानकारी देते हैं. ठीक है. So we have completed with the exercise number 1 and 2. Today we are going to complete the exercise number 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. So we'll start with the exercise number 3. In this, circle the describing words and underline the naming words these sentences describe. So there are 6 sentences given in this exercise. From these sentences we have to identify the describing words. We have to identify the describing words. Then we have to circle the describing word. Also we have to identify the naming words and we have to अंडरलाइन दिस नेमिंग वर्ड्स. जो ये सेंटेंसेस दिए हैं इसमें से हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है और जो नेमिंग वर्ड्स है उसको हमने अंडरलाइन करना है. ओके. सो आई विल स्टार्ट. There are dark clouds in the sky. So sky and the clouds are nothing but the naming words because these are the name of the things. So we will underline them. And the dark is describing about the color of the cloud. Clouds का color कैसा है? गहरा रंग है clouds का. That is why dark is the describing word. We will circle it. Next, this basket is empty. So the basket is the naming word because it is the name of the thing. So we will underline basket and empty. Empty is describing about the quantity. जैसे फुल, हाफ, एम्प्टी होता है ना, जैसे पूरा भरा हुआ, आधा भरा हुआ, हाफ, एंड एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली. सो एम्प्टी वर्ड इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्वांटिटी. दैट इज वाई एम्प्टी इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. वी विल सर्कल इट. नेक्स्ट, fruits are good for health. So fruits is the naming word. It is the name of the thing. So we will underline it because it is the noun. Good is describing about the quality. तो क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए गुड को हम सर्कल करेंगे. इट इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट, आलिया इज cheerful. So word आलिया is the name of the girl. This is the proper noun. So ये क्या है? एक naming word है इसलिए इसको हम underline करेंगे. cheerful is describing the quality of the आलिया कैसी है? cheerful है. एक cheerful एक quality है. So we will circle this word because it is the describing word. Next, Disha has curly hair. So Disha is the name of the girl. So this is also the naming word. We will underline it. Hair is also the naming word. It is the name of the thing. We will underline it. And curly is describing the quality of the hair. So curly is describing the word hair, which is noun over here. So curly is the adjective that is describing word. So we have to circle it. नेक्स्ट, आर्यन इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. सो यहाँ पे आर्यन इज द नेमिंग वर्ड बिकॉज इट्स द नेम ऑफ द बॉय. वी हैव टू अंडरलाइन. स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज ऑफ द आर्यन. आर्यन कैसा है? स्मार्ट और इंटेलिजेंट है. तो ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है इसलिए इसको सर्कल करेंगे. ओके. नेक्स्ट, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक एडजेक्टिव्स. सो यहाँ पे दे हैव गिवन अस the jumbled words है ना, and we have to rearrange these words to make an adjectives. So यहाँ पे ये जो letters है वो ऊपर नीचे लिखे हैं, उल्टे पुल्टे लिखे हैं, उनको हमने sequence में लिख के we have to frame a meaningful adjective from these given letters. So first word is thin is the adjective. It describes about the size. So thin मतलब पतला.
Next word is tough. Tough is also the describing word or the adjective. It describes the quality. Next word is heavy. Heavy, it describes about the weight. So next word is rich. Rich is also the describing word. Then small. Small is also the describing word because it describes about the size. Young. Young is also the describing word because it describes about the age. In this way, I want you to complete the remaining words, adjectives on your own. Then, exercise number 5. Fill in the blanks with the suitable adjectives. So, we have to fill up the blank spaces with the suitable adjectives. Okay. So, first sentence. My grandfather is dash dash, young or old. So, your grandfather's age will be, your grandfather must be वेरी वेरी ओल्ड इन एज, है ना. आपके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने क्या लिखना है यहाँ पे, माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड. फ्लावर्स हैव डैश डैश स्मेल. सो जो ये फ्लावर्स होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है या बिटर होती है. स्वीट मतलब मीठी मीठी या कड़वी कड़वी. तो जो है फ्लावर्स की स्मेल मीठी होती है. सो वी विल यूज द एडजेक्टिव ओवर हियर स्वीट. फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल. नेक्स्ट, अ स्क्वायर हैज डैश डैश साइड्स. हाउ मेनी साइड्स अ स्क्वायर हैज? अ स्क्वायर हैज 3 or 4 sides. So the proper describing word or the adjective which we are going to use over here is 4, because a square has 4 sides. कितने sides होते हैं स्क्वायर को? 4 sides होते हैं. Mother cooks dash dash dishes. Long or tasty? The proper adjective which will fit over here is tasty. Mother cooks tasty dishes. 5th one. We respect him because he is स्मार्ट पर्सन और ऑनेस्ट पर्सन. यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव ऑनेस्ट. वी ऑल रिस्पेक्ट अ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट इन हिज नेचर. जो भी व्यक्ति सच्चा होता है, ऑनेस्ट मतलब सच्चा, सच्चाई से पेश आने वाला, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑनेस्ट. सो इफ़ अ पर्सन इज़ ऑनेस्ट वी शुड रिस्पेक्ट हिम. सो प्रॉपर अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर इज ऑनेस्ट. दिस इज नथिंग बट द adjective because it describes the quality of the person. Next sentence, eat dash dash fruits daily. So the adjectives over here are big and fresh. So appropriate adjective which we are going to use over here is fresh. We have to eat fresh fruits daily. ताज़े फल रोज खाने चाहिए. So fresh is the proper adjective that will suit over here. Next, exercise number 6, match the opposite words. So we have to match opposite words. First, ugly. So what is the opposite word of the ugly? Quiet? No. Light? No. Thick? No. Beautiful? Yes, beautiful is the appropriate adjective which is opposite for the word ugly. Noisy. Noisy मतलब शोर. Noisy का क्या आएगा opposite word? Yes, quiet. Quiet means शांत. Clean. Clean means साफ. So what is the opposite word for the clean? It is dirty. Dirty मतलब गंदा. Dry. Dry means सूखा. What is the opposite word for dry? Wet. Wet मतलब गीला. Next, heavy. Heavy means भारी. वजन में जो भी कोई चीज़ का ज़्यादा वेट होता है, anything which has a which is heavy in weight, which has the weight, that thing is known as heavy. भारी. So opposite word for the heavy is light. Anything which has very less weight, that thing is known as light. जिस भी किसी चीज़ का वजन कम होता है उसको हम बोलते हैं लाइट, हल्का. Thin. Thin मतलब पतला. And the opposite word for the thin is thick. Next exercise number 7. Write a few sentences about your best friend using these describing words. So we have to write few sentences about our best friend using these describing words. They have given us a few describing words in this box. So with the help of these describing words we have to write few sentences about our best friend. So आप इनमें से कोई भी words use करके अपने best friend के बारे में
5-6 लाइन्स लिख सकते हो. नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज़ ईच एंड एवरी वर्ड. ओके, ईच एंड एवरी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरी नहीं है. आपको जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड लगता है अपने फ्रेंड के लिए, इस बॉक्स में से उसको ही चुन के वो आप सेंटेंस में डाल सकते हैं. ऐसे नहीं कि ये भी वर्ड आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, नहीं. 4-5 लाइन्स लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ these words, and you can use any of these words, not necessary that you have to use all of these words. Okay, just remember you have to write only few sentences. 4-5 sentences are more than enough. See, over here I have also written few lines about my best friend. Sunita is my best friend. So I have used word best over here. She is very loving and caring. So I have used words loving and caring over here. She is very helpful in nature. So I have used this word helpful. I respect her because she is an honest person. So I have used the word honest. I like her sincere and polite behavior. So I have used the word sincere and polite behavior in this sentence. So I have used few of the words from the given box, not okay I have used all of these words. Okay, so remember you have to write few sentences about your best friend using these words. Okay, I hope you have understood all the exercises which we have completed today. If you have any doubt, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.